Hello students. So today I am going to take up a new topic of ISC syllabus, the poem Death of a Naturalist by Seamus Heaney. So basically this poem is about how on maturity, जब हम mature होते हैं तो कैसे हमें facts of life हमारे सामने आते हैं जो childhood में एक innocence के form में हम लोग उसको enjoy करते हैं. So basically in this poem we will see that once जो पोएट है वो एक पॉन्ड के पास जाता है, वो फ्लैक्स डैम होता है. फ्लैक्स डैम क्या होता है? बेसिकली क्या होता था बिफोर समवेयर अराउंड मिड ऑफ 20th सेंचुरी, लेनिन इंडस्ट्री में नेचुरल फाइबर्स यूज होते थे. सो ये नेचुरल फाइबर्स कैसे निकाले जाते थे? फ्लैक्स प्लांट्स को फ्लैक्स डैम्स में डाल दिए जाते थे ताकि उनकी जो रूट्स हैं वो सड़ें, वो रॉट करें और उसके बाद उससे फाइबर्स निकाले जाते हैं. सो ये जो पोएट है ये फ्लैक्स डैम में जाता था. व्हाई? बिकॉज इसको वहां पे जो फ्रॉग्स होते थे उनके अंडे इसको बड़ा पसंद था, तो वो अंडे के फॉर्म में जो फ्रॉग्स होते थे उनको उठा लाता था और उनको अपने घर के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखता था. And he used to enjoy watching the cycle of formation of the frog from that small egg. उसको बड़ा मजा आता था. लेकिन जब वो बड़ा होता है तो ये बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं. होता क्या है कि वो कई साल बाद आफ्टर अ गैप ऑफ सर्टेन टाइम वो जाता है उसी फ्लैक्स डैम में. अब वहां के सिनेरियो हैज चेंज्ड, रियलिटीज हैज चेंज. जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारा परसेप्शन किसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अलग होता है. जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही चीज हमें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखती है. सो इसमें लॉस ऑफ इनोसेंस एंड इंटरेस्ट इन नेचुरल फिनोमेना लूज करता है चाइल्ड, इसलिए डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट इस पोएम का नाम दिया है. द पर्सन हु लव्स नेचर, उसका जो प्यार है नेचर के प्रति वो खत्म हो जाता है जब वो मैच्योर होता है. So let's begin the poem, but before beginning the poem, let's read some lines from page number 17. The Death of a Naturalist, the collection's second poem, details the exploit of a young boy collecting frog spawn from a flax dam. The narrator remembers everything he saw and felt at those times. So, जब वो अभी हम पोएम पढ़ेंगे तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉग स्पॉन क्या होता है, फ्लैक्स डैम क्या होता है. जब वो फ्लैक्स डैम पे जाता था तो उसको सब कुछ वहां की बातें याद आ रही हैं. He then remembers his teacher telling him all about frogs in a section that speaks volumes about childhood innocence. बचपने में कैसे टीचर जो चीज बताती हैं हम लोग के दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाता है, वो हम लोग इसमें देखेंगे. Finally, we hear about a trip to the Flax Dam that went wrong. So later on, he goes to the Flax Dam. जब वो mature हो जाता है, लेकिन वो trip उसकी खराब हो जाती है. He feels threatened by the grown-up frogs. लोगों को जब बड़े लोग होते हैं, reality, harsh reality को face करना बड़ा दुखदाई होता है. It's very harsh. It's very cruel to face the reality. वही इसके साथ होता है. His interest in nature has gone. This is the death of a naturalist. क्योंकि उसका इंटरेस्ट नेचर में खत्म हो गया है तो उसके अंदर का बचपने का जो नेचुरलिस्ट था, द लव फॉर नेचर था, वो खत्म हो गया. Suggests the poem's title. So let's begin the poem. The Death of a Naturalist by Seamus Heaney. So Seamus Heaney, who is the poet, he can also be called as a farm poet. Why? Because most of his poems they revolve around farms and he knew the process of flax rotting and everything in quite depth. काफी अच्छे से इनको पता है, जो कि उसका एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी इस पोएम में भी यूज किया है. So let's begin. All year the flax dam festered in the heart of the townland. So flax dam बेटा क्या होता है? It's a man-made pond. बेसिकली जो फ्लैक्स होता है इसकी ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं एंड इसमें एक पूरा सा जो प्लांट होता है फ्लैक्स का उसको फ्लैक्स डैम में डाल के सुखाते हैं, रॉट करते हैं, खूब सड़ाते हैं ताकि उसकी जो स्टेम्स हैं वो एक्सपोज हो सके सन से, वो रॉट करें एंड देन इट कैन बी यूज्ड एज फाइबर इन लेनिन इंडस्ट्री. राइट. सो ऑल ईयर द फ्लैक्स डैम festered means decayed, rotted. In the heart means middle of the townland means middle of the farm. So almost half of the year ये फ्लैक्स डैम में फ्लैक्स पड़ के वहां पे सड़ता रहता था.
पूरे उसमें अच्छे से, खूब अच्छे से सारा जो फ्लैक्स था उसको ये लोग एक्सपोज करते थे और पूरे साल, हाफ ऑफ द ईयर उसमें वो रहता था ताकि सन उसको अच्छे से रॉट कर सके. Green and heavy heated. There were lots and lots, large, खूब बड़े बड़े से lots होते थे. Flax had rotted there, had decayed there. खूब सारे परत पे परत flax जो होते थे वो वहां पे decay होते थे, वहां पे rot होते थे. Weighted down by huge sods. Sods means big piece of soil. बड़ी बड़ी soils से उनको सबको दबाया हुआ रहता था, बहुत ज्यादा वहां पे. Weighted means heavy. Daily, it sweltered in the punishing sun. So, Flax Dam has been personified as it sweltered in the punishing sun. So, sun was very oppressive. Sun बहुत oppressive. Sun भी personified है. So, sun was very oppressive, very hot sun. बहुत ज़्यादा hot sun में ये Flax Dam के flax वहाँ पे सड़ते थे, rot करते थे. Sweltered means very hot. Bubbles gurgled delicately. So the gurgling sounds were also produced. जैसे अजीब अजीब सी वहाँ पे rotting हो रही है. So it was not a pleasant or a comfortable environment. बहुत ही soothing environment नहीं था. बदबू रहती थी. कीचड़ है वहाँ पे, सब सड़ रहा है, rotting smell है. So the environment, the smell, everything over here shows that the environment over here is not very soothing. बहुत ही ज़्यादा बदबू वाला environment है. Bubbles gurgle delicately. So there were gurgling sounds of the bubbles. उसमें से हल्के हल्के कीचड़ में से bubbling sounds आ रहे हैं. Blue bottles wove a strong gauze of sound around the smell. So blue bottles are blue colored flies. ये जो flies होती हैं generally ये dead animals या dead चीजों के आसपास पाई जाती हैं. So blue flies also signifies death, something which is not good. So Blue bottles wove a strong gauze of sound around the smell. Metaphor use हुआ है. Blue flies wove a strong gauze. Gauze means network of sound around the smell. So they were attracted by the rotten smell. जो rotten smell है उससे ये blue flies आ जाती थी और वहाँ पे ऐसे करके थ्रू आउट एरिया को वो लोग कवर अप कर लेते थे. पूरे एरिया में वो ब्लू फ्लाइज की गंदी वाली स्मेल से वो अट्रैक्ट होके ब्लू फ्लाइज आती थी एंड दे यूज्ड टू क्रिएट अ साउंड, ऐसे बजिंग साउंड्स क्रिएट करते थे. सो गर्गल पे ऑक्सीमोरॉन है. गार्गल जो है ये साउंड को डिपिक्ट कर रहा है. सो हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन. There were dragonflies, spotted butterflies. So there were different things to be seen. वहाँ पे dragonflies are again insects, butterflies, spotted butterflies थे. But best of all was the warm, thick slobber of frog spawn that grew like clotted water in the shade of the bank. See, so as a child, poet used to observe a lot of things. वो ब्लू बॉटल फ्लाइज देखता था, ड्रैगन फ्लाइज देखता था, स्पॉटेड बटरफ्लाइज देखता था. बट द बेस्ट ऑफ ऑल, उसको सबसे अच्छा क्या लगता था? वार्म थिक स्लोबर. स्लोबर सलाइवा, जो थूक होता है हमारा, सलाइवा, स्लाइमी चीज को बोला गया है, चिकनी चिकनी चीज को. ऑफ फॉक्स प्रॉन. फॉक्स प्रॉन इज जेली लाइक सब्सटेंस. एक सब्सटेंस होता है जेली लाइक जिसमें एग्स होते हैं फ्रॉग के. वो ऊपर से पूरा एक कवर टाइप्स रहता है और अंदर अंडे रहते हैं. सो दिस वॉज द थिंग विच अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द पोएट द मोस्ट. सबसे ज्यादा उसको ये फ्रॉग स्पॉन पसंद आता था. दैट ड्रू लाइक क्लॉटेड वाटर. सो सिमिली यूज की गई है. पानी जो था वो इतना थिक जैसे हो जाए, जब पानी सड़ के थिक सा हो जाए, ऑल्दो पानी सड़ता नहीं है लेकिन थिक थिक हो जाता है, वैसे ही वो लगता था. एंड ही यूज्ड टू लाइक दैट थिंग. वो बड़ा अजीब सा गिज 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 काइंड ऑफ स्लाइम्स. आप लोग स्लाइम जो यूज करते हो, बच्चे खेलते हैं ना स्लाइम, तो उस तरह का कुछ उसको लगता था. इन द शेड ऑफ द बैंक, सो नियर द बॉर्डर्स, उसको ये सारी चीजें दिखती थी. एंड ही यूज्ड टू गेट रियली अट्रैक्टेड बाय फ्रॉग स्पॉन. फ्रॉग स्पॉन जो वही जेली लाइक स्ट्रक्चर था, उसको बड़ा अच्छा लगता था. वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है. Here every spring I would fill jam potfuls of jelly, expect to rage on windowsills at home. So every spring he used to go and he used to collect these frog spawn. वहाँ से जाता था, frog spawn collect करके लाता था. And I would fill jam pots full and he used to fill the jars. वो jars में भरता था और ला के अपने विंडो सिल्स पे रखता था. विंडो सिल्स का मतलब होता है जो
नैरो शेल्फ होता है बिलो द विंडो, जो कि जनरली निकला हुआ होता है, उसको बोला जाता है. At home, on the shelves, at school, स्कूल में भी रखता था, घर में भी रखता था. And wait and watch until the fattening dots burst. And he was very eager to see these eggs becoming tadpoles. तो बड़ा excited रहता था. Fattening का मतलब growing eggs. So he used to watch how these eggs which are growing every day, suddenly one day they will burst. वो एकदम से फूट जाएंगे. They will come to life. Into nimble. Nimble means quick walking. जल्दी जल्दी चलने वाले, छोटे छोटे steps पे चलने वाले. Swimming tadpoles. Tadpoles young frog. तो he was very excited to see कैसे वो eggs जो है finally धीरे धीरे grow करेंगे, burst करेंगे और वो tadpoles में convert हो जाएंगे. So he was very excited to see that. Miss Walls would tell us how the daddy frog was called the bullfrog. See, Miss Walls जो थी, वो इनकी टीचर थी, and he had a lot of impact of his teacher on him. बहुत ज़्यादा ये काफ़ी इन्फ्लुएंस था अपनी टीचर से. उन्होंने बताया था लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग बताया था, एंड डिटेल्स अबाउट द फ्रॉग बताया था, कैसे डैडी फ्रॉग को याद रखने के लिए डैडी फ्रॉग को बुल फ्रॉग बताया था, एंड हाउ ही क्रोक्ड एंड द वे ही यूज्ड टू क्रोक. Croaking is the sound of the frogs. And how the mammy frog, mother frog, lay hundreds of little eggs, and this was frog spawn. So everything was told to him by his teacher कि ये frog spawn होता है, इसमें अंडे रहते हैं, ये ऐसे बड़े होते हैं, फिर वो tadpoles बनते हैं, फिर वो frog बनते हैं. So this entire cycle was taught to him by his teacher. And ये mother frog होती हैं, ये father frog होते हैं. mother frog जो है वो eggs lay करते हैं. This thing वो उसके दिमाग में बहुत अच्छे से था. So basically the stealing of this frog spawn was an innocent act. ये उसके लिए एक बचपने का काम था. Generally children when they are young they do such kind of acts. कुछ उठा लाए, फिर अपने सामने देख रहे हैं, वो grow करते हुए. So this was an act of innocence. लेकिन later on we will see that he even regrets for this. So here we will see that this is a kind of an experiment done by the children during their free time. So he also used to bring these frog spawn, and he used to observe. He used to love observing these eggs growing and then becoming into tadpole. So everything was very very full of life. He loved doing this. He was a naturalist. उसको nature के प्रति बहुत attraction था. कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. Plus उसकी teacher ने उसको इतने अच्छे से बताया हुआ था. So he was a true naturalist till here. You could tell the weather by frogs too, for they were yellow in the sun and brown in the rain. So we can say that the speaker is proud of his knowledge. He wants to display that he knew almost everything about frogs. He could even tell the weather through frogs. Yellow है तो sunshine होगा, sun होगा. Brown है तो rain होगा. तो rain here also signifies something in negative change होगा. Till now everything was fine. Till now he was in his innocence stage, childhood stage. So he loved everything about nature. He loved the frog spawn. He loved bringing them to his house. He loved keeping them, observing them. Everything was perfectly the way he wanted. Everything was really nice. But now in the second stanza we'll see that harsh realities of life are exposed in front of him. कैसे उसके सामने harsh realities आती हैं, and जो उसके experiences हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जो कि उसके childhood time में रहते थे. Then one hot day when the fields were rank with cow dung in the grass. So then से हमने देखा है कि हमारा second stanza start हो रहा है. Then here suggests the change of perspective. Point of view यहाँ पे change हुआ है. So there is a time lapse. After some time when the speaker grows, उसमें अंदर maturity आती है, वो एक बार फिर से Flagstaff visit करता है. But this time his experience was absolutely different from the way he used to experience earlier. One day when the fields were rank with cow dung, rank means filled and cow dung is गोबर. So एक बार जब वो जाता है Flagstaff में, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा cow, क्योंकि again cow dung है, वहाँ पे गोबर है, कीचड़ है, so वहाँ पे अजीब सी गंदी सी smell रहती है. यहाँ पे auditory imagery बहुत जगह use हुई है, visual imagery बहुत जगह use हुई है, olfactory imagery. Olfactory is imagery of smell.
स्मेल की, विजुअल देखने की, तो ये सारी बहुत ज़्यादा यूज हुई हैं. Then one day when the fields were rank with cow dung in the grass, the angry frogs invaded the flax dam. Invaded means attacked. So what happens after a gap of time when he visits the flax dam again? He is shocked to see that there were many angry frogs who had attacked the flax dam. वहाँ पे बहुत सारे angry frogs बैठे हुए थे. I dug through hedges to a coarse croaking that I had not heard before. So dug means ऐसे करके बचना, escape करना. So he was shocked to see actually this harsh sound of the frogs, those frogs who were present over there, and they were croaking together, all together. सब लोग इतनी कस के croak कर रहे थे. So he dug through the hedges to a coarse croaking. Coarse means rough. So he dug himself, he tries to skip from that situation, उस rough cracking से आवाज से वो बचता है, that I had not heard before. This was not a familiar experience. ऐसी sound उसने पहले कभी भी नहीं सुनी थी. The air was thick with a bass chorus. So the air was filled with the tone जो bass sound होता है of many frogs together. बहुत ही harsh grave sound जो नीचे वाला sound होता है उससे गो करके बहुत ही कस के आवाजें आ रही थी throughout में. So it was not pleasant to listen at all. Throughout में he could hear the rough harsh sound of the frogs croaking together. Right down the dam, gross-bellied frogs were croaked on sods. Gross means ugly and bellied means with huge fat face. Were croaked. They sat in raised position. All the frogs, they were sitting in raised position and their loose necks pulsed like sails. Simile use हुई है. Their loose necks, they were throbbing like sails. Sails यहाँ पे जो ships होती हैं, जो boats होती हैं, जब उनके sails में air भर जाती है तब वो आगे बढ़ती हैं. तो जैसे air जब भर जाती है फिर अंदर आता है जब air निकल जाती है, तो जैसे उसमें movement होता है, throbbing होता है, वैसे he could see the frogs throats throbbing when they were croaking. जब वो croak कर रहे थे तो neck कैसे throb कर रही है. Some hopped, some frogs were hopping, jumping. The slap and plop onomatopoeia hymn were obscene thread that was vulgar to see. It was not good to see at the way they were behaving, the way the frogs were jumping. It was not soothing to the eyes. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा vulgar चीज लग रही थी. So the aggressive frogs, their coarse croaking, their movement, everything was very threatening. It was not pleasing at all. It was vulgar. It was cheap to see also. Some sat poised like mud grenades. So grenades are small bombs जो कि hand से फेंके जाते हैं. So कुछ ऐसे बैठे हुए हैं. Poised means to sit in a balanced way. So some sat poised like mud grenades, as if वो हाथ mud के बने हुए grenades हैं, bombs हैं. Their blunt heads farting. So basically their soft heads, sound of the movement of the heads have been compared to farting. It's not a decent comparison at all. The comparison itself is quite cheap, it's quite rude. So farting is to letting out the air. So their blunt heads farting. He does not feel comfortable over there. He feels very disgusted. He is not liking the environment at all. I sickened, turned and ran. He feels very sick at heart. He does not feel happy. There was a death of the naturalist which was there in him once. He does not feel inclined towards nature now the way he used to feel when he was a young child. The great slime kings were gathered there for vengeance. So the great slime kings means यहाँ पे again frogs को बोला गया है. Why? Because they were sitting in such a royal manner. इतने royal way में बैठे हुए थे. ऐसा लग रहा था. Vengeance means revenge. वो revenge लेने के लिए बैठे हैं. Poet से यहाँ पे revenge लेना चाहते हैं. Why? Because poet ने उनके tadpoles चुराए हुए थे. पहले चुराता था ना. Poet को थोड़ा सा यहाँ पे guilty भी लगता है कि शायद उससे ये गलती हो गई. उसको childhood innocence में पहले चोरी नहीं करने चाहिए थे tadpoles.
and he feels as if these frogs are sitting over there in order to take revenge from him now कि तुमने हमारे पहले tadpoles क्यों चुराए, and this is the reason why they were behaving in such a rude and a harsh way. And I knew that if I dip my hand, the spawn would clutch it. So उसको ये बात अब पता थी कि अगर उसने अब हाथ डाला, इसमें हाथ डाला, तो it will be very dangerous for him. And he feared कि अगर उसने इसमें हाथ डाला तो रिटेलिएशन में फ्रॉग स्पॉन उसका ही हैंड क्लच कर लेगा, होल्ड टाइटली. क्लच मीन्स होल्ड टाइटली, उसको पकड़ ले. सो वी कैन से दैट चाइल्डहुड इनोसेंस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर. एक टाइम आता है जब हमें मेच्योरिटी आती है एंड देन वी रियलाइजेस दैट एवरी एक्शन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग blindly saying that it was just innocence. And at last we can say that the loss of innocence is the consequences and price of growing up. Hope this poem is clear to you. If you have any doubts, please do ask me in the comment section. And please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you so much. Bye-bye.